Assalamu alaikum. This is Sir Ahmed Hussain from Higher Secondary Section of Kailaru Public School. So today's topic is the voice of God. In our previous video lecture, my students, मैंने आपको अपनी जो है क्लास मैट्रिक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका एक ओवरव्यू दिया था, and I told you about the format of examination as well. So now this time, according to the book, that is the first lesson point, that is the voice of God, रब की आवाज़. आज हम इस लेसन पॉइंट को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इससे रिलेटेड जो भी जो हमारे एरियाज हैं, एक्सरसाइज हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, और इसके अलावा इसका मैसेज समझेंगे, और साथ ही साथ इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इसको असेस करेंगे और एनालाइज करेंगे. तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं द वॉइस ऑफ गॉड. वॉइस ऑफ गॉड, रब की आवाज़. इसकी जो वर्ड जो मीनिंग है, रब की आवाज़, हमारे परवरदिगार की आवाज़. द पॉइंट इज लुइस आई न्यूमन. लुइस आई न्यूमन की ये पॉइंट है, और इसका पूरा नाम लुइस इज़राइल न्यूमन है, और इसने जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर पोइट्री की है, मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं, एंड अमंग्स्ट दोज राइटिंग्स द पॉइंट दैट इज नेम्ड एज द वॉइस ऑफ गॉड इज ऑल्सो वन, एंड इट इज़ नाउ द पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सो बेटे, द वॉइस ऑफ गॉड, परवरदिगार की आवाज़. शायर कहता है कि वो अपने परवरदिगार की तरफ उसके करीब जाना चाह रहा था, उसकी आवाज़ सुनना चाह रहा था. अल्लाह पाक की या अपने परवरदिगार या अपने रब की जो कुर्बत हासिल करने के लिए वो एक ऊंची जगह की तरफ जा रहा था. तो फिर उसके बाद रब ने उसको जवाब दिया कि वो ऊंचाई की तरफ आने के बजाय नीचे वापस जाए और उसको यानी रब को इंसानों के दरमियान तलाश करें. सो एज द वर्ड्स ऑफ द पॉइंट आर, आई sought to hear the voice of God. शायर कहते हैं, लुइस आई न्यूमन states in the first line of the stanza that I sought to hear the voice of God. Sought is basically third form of the verb seek. Seek तलाश करना, इरादा करना, किसी चीज को की तरफ जो है ना कोशिश के लिए कोशिश करना. तो this is the third form of the verb seek, which is written here as sought. कि शायर जो है वो रब की आवाज सुनने का इरादा रखता है, बट एंड क्लाइंब द टॉपमोस्ट स्टीपल. और जब उसने इस चीज का इरादा किया है, when he intended to hear the voice of God, so then he decided to go to climb or to reach the highest point of a building. और वो कौन सी बिल्डिंग है? यहाँ पर जो steeple word that is used in this line, कि भाई steeple यहाँ पे जो है that is the tallest structure, usually here it is considered as a church. शायर जो है वो एक चर्च की ऊंची जगह पर पहुंचता है. उस चर्च की जो इमारत है, उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पर चढ़ जाता है, ऊपर जो है जाकर इस इरादे से, बिकॉज ही सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, ही थॉट दैट कि मैं इस ऊंची जगह पर पहुंचने के नतीजे में मैं अपने रब के बहुत करीब चला जाऊंगा और मैं उसको बहुत करीब से सुन सकूंगा, उसको बहुत करीब से जान सकूंगा. मगर in the next lines, in the subsequent lines, the poet says, but God declared
go down again. And God declared, go down again, I dwell among the people. ये हमारी ओवरऑल एक पॉइंट है, और इस पॉइंट के अंदर बहुत गहरा मैसेज शायर ने हमें दिया है, जो कि इन आखिरी 2 लाइन्स के अंदर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि when the poet intended to hear the voice of his Almighty, and in order to fulfill that purpose, he decided to reach the topmost point of a building that is usually considered as a church here. But when he reached there, जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके परवरदिगार ने, उसके रब ने उसे हुक्म दिया, go down again, तुम नीचे जाओ। वो उसे हुक्म देता है, go down again, I dwell among the people, क्योंकि मैं इंसानों के दरमियान बसता हूँ, मैं इंसानों के दरमियान रहता हूँ, which means कि इंसान के दिल में रहता हूँ। No doubt, the place of our Almighty, place of our God is in our heart. तो इन 2 लाइन से ये हमें ऑब्जर्व हुआ, ये एक मैसेज हमने महसूस जो है ना, जो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की कि हमें अपने परवरदिगार की कुर्बत हासिल करने के लिए, उसको राजी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए उसकी मखलूक की खिदमत करनी है। We have to serve the humanity. We are forbidden to disturb or tease anybody else. Even हमें किसी को तकलीफ नहीं रसानी होती, न सिर्फ इंसान जात को, बल्कि हमें तो किसी भी लिविंग थिंग, किसी भी क्रिएचर को अपनी तरफ से तकलीफ नहीं पहुंचानी, बिकॉज ये उसकी मखलूक है, उसकी पैदा करना मखलूक है। और अगर हम उस रब की मखलूक की खिदमत करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, तो अल्टीमेटली विल बी क्लोज, विल बी वेरी क्लोज टू द गॉड। So this is about the poem. This is the message that is given by the poet Louis Arnold in his poem. That is purely very spiritual poem, जिसके अंदर जो है एक बहुत गहरा मैसेज छुपा हुआ है कि हमें अपने रब की इबादत और उसकी खुशनुदी या उसकी गुर्बत हासिल करने का एक वाहिद जरिया है टू सर्व द ह्यूमैनिटी। एंड नो डाउट हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि तुम ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो और परवरदिगार तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। सो इफ़ वी सर्व द ह्यूमैनिटी, if we take care of the people that are the creatures of Almighty, so ultimately we'll be blessed and we'll be very close to the Almighty, to our God as well. So now my students, this was all about the poem, and now it is time for some sort of comprehension. जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर बता चुका था कि इन द एनुअल एग्जामिनेशन यू आर आस्क्ड अबाउट सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशंस ऑफ अनसीन पैसेजेस। आपको अनसीन पैसेजेस की कॉम्प्रीहेंशन करनी होती है, हमें उन सवालात के जवाब देने होते हैं जो हमें पेपर में पूछे जाते हैं। और डेफिनेटली all these questions are extracted and are taken from these sort of units, and most of the questions are also mentioned at the end of each lesson in your textbook. So the first question that is asked in from this lesson, this poem, is that I am going to write on a board and we will discuss it also.
से हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ तवज्जो करेंगे। नंबर 1, व्हाई डिड ऑथर क्लाइंब द स्टीपल? And this is the first question that is also clearly asked at the end of your point. Why did author climb the steeple? तो जो शायर है या जो राइटर है जिसने ये पॉइंट लिखी है, वो क्यों ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर क्यों पहुंचता है, क्या वजह है? Here you are asked to give the reason. The reasoning is asked. Obviously, he decided he wanted to be close to his Almighty. वो चाहता था कि वो अपने रब के बहुत करीब जाए, उसकी कुर्बत हासिल करे, उसकी रजामंदी हासिल करे, उसको सुने। जैसा कि शायर कहता है कि I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple. So that's why I think जैसा कि हमारा आंसर भी उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करे जो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी हमारे एनुअल एग्जामिनेशन में हमसे कहे जाते हैं कि जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी रेलेवेंट, इसके अंदर रेलेवेंस होनी चाहिए। रीजनिंग पूछ रहा है, रीजनिंग देंगे, रीजन ही देना है। एंड ऑल्सो जो उसके जो हमें एक सेट किया गया है एग्जाम्पल सेंटेंसेस के नंबर को, कि आपके आंसर को 3 या 4 जुमलों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यू शुड कंपोज योर आंसर within 3 to 4 sentences. Just you give the reasoning in this answer कि भाई the reason was that he was trying to be close to the Almighty. He intended to hear the voice of his Almighty. That's why he climbed the top of the steeple. Now the second question, why did God tell him to go down? So my students, this is the second question कि रब ने उसे वापस जाने के लिए क्यों कहा? Why? Once again, here the reason is asked. हमें रीजन देना है कि रब ने उसे वापस जाने के लिए क्यों कहा। जैसा कि हमने अभी इस पॉइंट के अंदर पढ़ा और पॉइंट ने कहा था कि एंड गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन, आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। यानी हमें इसके पीछे इन हिडन लाइंस की जो पीछे जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है उसको निकाल के उसको जाहिर करना है अपने आंसर में कि रब ने उसे वापस जाने के लिए इसलिए कहा कि ऑर्डर हिम टू गो डाउन अगेन बिकॉज गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पीपल, और वो इंसानों के दरमियान रहता है। यानी कि अगर हम अपने रब की मखलूक, उसकी पैदा करदा मखलूक को की खिदमत करेंगे, वी सर्व द ह्यूमैनिटी, हम उनका ख्याल रखेंगे, तो अल्टीमेटली वी कैन गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ इट, हम उसके करीब जा सकते हैं, हमें किसी ऊंची जगह जाने की जरूरत पड़ेगी। सो योर आंसर शुड बी ब्रीफ or briefly within 3 to 4 sentences. And the third and the last question, what is the message of the poem? So simply सारी पॉइंट पढ़ने के बाद ओवरऑल जो एक अगर हम 1 सेंटेंस के अंदर भी इसका मैसेज देने की कोशिश करें कि द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज द मैसेज, इज प्योरली द मैसेज ऑफ दिस लाइफ, इन दिस लाइफ इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की फलाह, उनकी भलाई, उनकी बेहतरी, यही सब कुछ जो है दिस इज द मैसेज ऑफ द पॉइंट।
And if we do all these things, if we serve the humanity, if we take care of others, and if we do not tease others, हम किसी की के लिए जो है ना तकलीफ का जरिया अगर नहीं बनते तो अल्टीमेटली वी कैन गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। हम अपने रब के करीब जा सकते हैं, हम उसकी खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, उसकी रजामंदी हासिल कर सकते हैं। There is no need to go at the highest point anywhere in the world. So this is all about the message of the poem, and also your message should be brief as well and within certain limit of sentences. So मेरे बच्चों, this was all about the comprehension and the questions that are exactly asked at the end of your poem. And this was the first poem, The Voice of God, which is written by Louis Newman. Hope so कि आपको ये topic clear हुआ होगा, and wish you all the best of luck. Thank you.